Mahatma Gandhi. How do you view him? Do you think he was a complex personality, or do you think he was a good person, or do you think he was a evil guy, or how do you view him in India's context? एक second. Let Ishika complete, then Karan can join in after that. Ishika, go on. Yeah, sure. Yeah, I think if I heard it right, so the question was that how did Gandhi get the popularity, and how, like, the journey of becoming father of the nation, right? If I'm not wrong, Shaji. Yes. So just before he became, what was the reason of his popularity, and why do I see? Was it a thing? Were the Brits afraid of him? That is why they were covering him, or if that was the case, they would have only covered him in the UK or Africa. Why was this stage being built even before he had returned to from South Africa? Is very interesting question, and that's not something which I have an opinion on in terms of a conclusive one, or why he recruited people or endorsed the British Army, like I said. But these are some of the points which people who are radically against him like point out, and these are hard facts. So they are worth thinking about, if you know what I mean. Go ahead, Isha. I think, as far as I know, like according to my limited knowledge, it was the Satyagraha after which he gained much of his popularity. He was opposing the Rowlatt Acts, where the Britishers could imprison anyone without a trial for the suspect of sedition. So I think the Satyagraha movement in the 1990s was the first movement where he gained much of the popularity, and after that is it was like a chain of movements going on. Then came the civil disobedience movement, and the massacre in the Amritsar also happened. So like he actually became kind of a, you can say, a huge political figure after the Satyagraha movement. No, but Ishika, my argument is, and what the facts show, and first of all, I think you said it incorrectly. Not 1990s, not 1990s. People are going to No, like, 1919. yeah, 1919 is much Yeah. later. So Gandhi, when he traveled to South Africa, was 1893, Ishika. Mhm. And he returned in 1915, and that's when he basically began to advocate. So what the time period you're referring to is much later on. That's 4 years after that. On his return, if you look at the headlines from that time period, and if you look at the amount of people who went to receive him, that is very interesting. That a person who's suffered from an incident in South Africa, a normal run of the mill person, okay, a bit upper class, very extremely educated, he returns and he's received as a leader by hundreds of people. How do they know about him? Why do they know about him? And why is the British government allowing that? Do you understand? Especially when there is a lot of other movements which have begun to show up in form of cracks, and that is what the RSS or right wing people or anti-Gandhi people usually bring up. That's one of the primary points they bring up. Can I respond to that? Yeah, go ahead. So I think the people who have read about his time in South Africa would know that he was kind of a activist back in Africa, South Africa too. So let's remember that the Indians who were working in South Africa, or the people who got a formal education in England, were not any kind of ordinary people. The likes of Jinnah and the likes of Gandhi, all these people who studied in England,
were like, the elite of the elitist people from South Asia or India in those times. They were like, just imagine that, not more than a few thousand people were able to study in England during the British era. Just couple of thousand people, or not more, not even more than, like, couple of thousand people were able to study in England under the British education system. So back also in when he was in South Africa, his ideas of non-violent, uh, peaceful, non-compliance. His ideas began in South Africa when he was thrown out of the first class train. He resisted, he also wanted a lot of rights for the Indian people. Again, a racist reason, because he thought that, the Britishers treated Indians as they treated the blacks. So he wanted more rights for the Indian people, because he somehow thought that the brown Indians were somehow better than the black Africans. So, his ideas were gathering popularity. He wasn't a nobody even before he entered India. He was a very popular guy, and his ideas were very, very, non-compliance. They were like appreciated. Even just imagine, so British, even the British era, even England wasn't like, all the people were on one page. It was a time, the industrial age, and even in back in England, was a very oppressive period for the Britishers itself. From miners were working in the mines, coal mines, and all these mines. You had people working like 16 to 18-hour shifts in a day. So even, the people, they used to write about him. There was already a lot of things written about his ideas, so he was already a pretty popular guy. And when he came back to India, he wasn't a nobody. So to say that, the Britishers planted him is a bit of a stretch. No, no, I'm not. Maybe he, I'm not the one. I'm just bringing in the other side of the argument. so So that's my Aditya, that's my, you yeah, can read but about, he did Aditya, many kind of peaceful so protest Aditya, in would South you Africa. consider So if you that's the look at answer. the no, but if you look at the family backgrounds, or in terms of the eliteness, would you say that at least Jinnah and Nehru, in terms of their family background, were kind of on par with Gandhi, and when they Yes, they returned, were. yeah, but when they returned, they did not receive any such kind of Yeah, because they did negative not had a background of, reception. 20 years working as a lawyer in South Africa, where Gandhi got a lot of his popularity in South Africa, where he, multiple, he did multiple protest and non-compliance, protest for the blacks, and even mostly for the Indians who were working in South Africa. You know that, still So South what Africa has was a big. so that's we've come to a very imperative part. So do you realize, like, for over 20 odd years when he was in South Africa, the kind of cases he was fighting, and the way he was actually leading a situation uh, before that incident occurred? Do you realize that he was awarded various awards, not just one or two. He was bestowed with various kinds of awards and various kinds of luxury items by, again, on behest of the British government, British Empire, for Yeah, being a because he was loyal working for subject. the British in South Africa. He was working for the British. But he wanted more rights for the people. He was also jailed for his, So why for was his he protest. thrown He was out? in jail for Why 3 or 6 months. so my question is, so according to Gandhi, a lot of people have basically pointed that out as well, that Gandhi did not entirely leave South Africa on his own will. The situation was that his working paperwork was kind of terminated, and he was left with no choice. If that is the case, and the reason behind that,
was that he was being chaotic to, apparently being chaotic to the British government and the way they rule, and the authorities did not like him. So why would they send him to a more flourishing area of their empire, even though he was indigenous to India, where the issues had already begun to spring up? That's the second thing which comes to mind. They should have abstained him from coming to India altogether, because if he's becoming such an issue in South Africa, he would be worse in India, where he would be able to relate to people culturally. He would be able to speak to people in a more convincing tone, and he can be much more disastrous. You have to understand, India compared to Africa, or South Africa in that case, was much more uh, lucrative. So the question is, why would an authority who have an issue with somebody in a non relatively stable part of their empire send him to a more volatile and more destructive place if he was so destructive and against them? Aditya, Ishika, Karan, Medusa, anyone? That is a very important question. I think I think if Karan Karan wants bhai, yeah, Karan bhai, if you would like to respond. Thank you, yaar. There's a guy called Abhishek Anand. I think Abhishek को ज्यादा पता है. अभिषेक, अगर आप आ सकते हैं माइक लेके तो आप अपना ज्ञान दें हमें भी. I think शादी and to all of the panels, मेरा तो ये शादी की बात, I think 90% is right. Gandhi ji absolutely is a byproduct of Britishers. तब वो उनको इस्तेमाल करते थे जब जब उनकी जरूरत पड़ती थी. एंड मूविंग फॉरवर्ड, अब देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो गांधी जी ब्रिटिशर्स के लिए एक एस्केप गोट भी है. कारण ये है कि दुनिया को बताते हैं कि देखो जी, गांधी जी वहां पे वो लाठी लेके खड़े हो गए थे, तो हम डर गए, तो हम सब छोड़ के आगे वापस. अब हम लोग यहाँ पे बैठ के वी कैन गिव आवर ओपिनियंस, हम अपने विचार दे सकते हैं, पर दुनिया में तो नैरेटिव एक सेट कर दिया ना उन्होंने, अंग्रेजों ने. अब दुनिया की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, अमेरिका की, ब्रिटेन की, या कहीं भी, लाइक कनाडा या यूरोप की भी काफी हद तक, वहां पे गांधी के बारे में पढ़ाया जाता है, ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाया जाता है कि एक होती है रियलिटी, एक होता है नैरेटिव. तो ये जो गांधी कैरेक्टर है, ये अंग्रेजों को बहुत सूट करता है. और अंग्रेजों को इसलिए सूट करता है कि देखो जी, हम तो लड़े नहीं वहां पे, किसी को मारा भी नहीं. गांधी जी ने वहां पे आंदोलन कर दिया, सत्याग्रह कर दिया, तो हमने कहा भाई ठीक है, आपका राइट है, आप चले जाओ. और वही नैरेटिव आज तक इंडिया ढो रहा है, गांधी वाला. वो जो अभी फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे, या जो वो भी प्रोटेस्ट होता है, वो क्या होता है इंडिया में, वो सड़कों पे आके बैठ जाते हैं गांधी स्टाइल. तो वो इट्स काइंड ऑफ अब उनकी, अगर आप देखें गांधी जी की हिस्ट्री, तो वो, अगर देखा जाए तो वो अपना मकसद तो पूरा नहीं कर पाए. शांति वो नहीं लेके आ सके, क्योंकि अगर शांति लेके आ सकते तो बंटवारा होता तो 10 लाख लोग मरते. 10 लाख लोग भी मर गए, बंटवारा भी हो गया, फिर भी गांधी जी शांति के वो प्रतीक है. गांधी जी की बात क्या कहते हैं, अंबेडकर माने, पटेल साहब माने, बट गांधी जी की बात हमारे जिन्होंने तो मानी नहीं. वो कहते आप अपने आइडिया अपने पास ही रखो. तो इट्स काइंड ऑफ, एक तो है हमारा लाइक पीपल फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट, हमारा एक अपना ओपिनियन है. एक जो दुनिया ने नैरेटिव सेट कर दिया ना फुरकान भाई, वो नेक्स्ट लेवल पे ही चले गए. तो वो तो उसको बेचते हैं गांधी को, भी है, या यूके में भी है, और कई जगह पे भी है. वो कहते देखो जी, तो इससे तो हम डर के आ गए, ये तो डंडा लेके खड़ा हो गया था. सो इट्स अ पर्सन नाउ. आप उसको जिस तरीके से अपने हिसाब से यूज करना चाहें कर सकते हैं, बट उसकी अब जो पॉलिटिकल जो उसका गेन, जो उसने गेन करना था, वैसे गांधी जी कह के गए थे
कि अब भारत आजाद हो गया कि कांग्रेस पार्टी को बंद कर देना चाहिए, वो किसी ने सुना नहीं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस शुड बी क्लोज नाउ, बट इट्स अ बिग पर्सनालिटी। आज के हमारे टाइम पे जो हम लोग, हमसे पहले की जो जनरेशन थी, ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज हिम इन द वर्ल्ड। अब अब रियलिटी क्या है, अंग्रेज क्यों भागे, बाकी दुनिया सारी जहाँ जहाँ अंग्रेजों की हुकूमत थी, श्रीलंका में, मलेशिया का गांधी कहाँ पे है, यू नो जैसे एक राइट विंग का वो पूछते हैं वो लोग कि जो अपना इजिप्ट के गांधी जी कहाँ पे हैं। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, बट नाउ वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी बन गए हैं, उनको हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है। इट्स इट्स काइंड ऑफ, जैसे आप कह लें कि एक क्या डार्विन थ्योरी, आप अपने उसके उसके ऊपर नेगेटिव ओपिनियन दुनिया में दे ही नहीं सकते हैं। अगर आप अपनी ओपिनियन दें उसके खिलाफ, तो दुनिया आपके पीछे पड़ जाती है, तो आप तो साइंटिफिक माइंड ही नहीं है। तो नैरेटिव जो उन्होंने इतना बड़ा बिल्ड कर दिया है, उसको तोड़ना तो आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल एट द मिनट। बाकी आपकी बातें मैं सुन रहा था काफी, एक्चुअली यार आई वाज रनिंग लेट, मैंने आपको पहले मैसेज किया था, सो दैट्स व्हाई। एंड करण भाई, एक एक बात मुझे बताएं। आई आई अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट कि वो एक नैरेटिव बन चुका है। गांधी इज वेरी मच पार्ट ऑफ द सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया। आई थिंक देयर इज नो वन currently living in India who did not grow up with that kind of mindset. Then why all of a sudden we see the praise of God say, we see all these facts come out, we're listening to all these things emerge? ये सारे चीज़ें आप ये हमारे कमेंटेटर्स के अंदर भी देख लें, अभिषेक साहब कोई बैठे हुए हैं और लोग भी जो हैं, they're basically stating the same thing. Now, if you look at a term जहाँ पे आप एक central figure को या demonizing of Nehru in various ways, it seems to me that there is this emergence. What is the mindset behind that? अब देखिए What is the सारी, reason behind that? अब लाइक जैसे कहते हैं कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, राइट। अब ये जो है, गांधी जी बड़े अच्छे हैं, शांति प्रिय हैं, वो लाइक नॉन वायलेंस है, ये है वो है। उस समय का मीडिया नैरेटिव अंग्रेजों का था, तो उनका चलाया हुआ कि हाँ जी गांधी जी तो बहुत अच्छे थे, गांधी जी लाइक ऑलवेज आफ्टर द पीस एंड एवरीथिंग। अब देश जो अब आजाद है आफ्टर 75 ईयर्स, पीपल हैव राइट टू गिव देयर ओन ओपिनियन आल्सो। अब वो भी अपनी ओपिनियन रखते हैं, तो नहीं जी हमारे विचार में ऐसे है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए, इसी को तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलेंगे ना, कि बोथ साइड अलाउड टू स्पीक। जिनका नैरेटिव अब जो लोगों को ज्यादा सूट करता है, ये तो आप मानेंगे ना यार, आप सबकी, गांधी जी फेल टू पीस डील तो करवा नहीं पाए ना। पीस डील होती तो फिर शांति के इतने प्रतीक थे, तो बंटवारा ना करने देते, ना मरते लोग इतने, वे लोग हैं वहां पे। तो बेसिकली व्हाट ही प्रीच ही डिडंट प्रैक्टिस। यहाँ अगर बंटवारा ना होता, लोग इतने ना मरते, फिर हाँ गांधी जी का फिर कोई वो नहीं था ना। तो गांधी जी ने वोट एवर ही सेड, हाँ जी उन्होंने मनवा लिया। उन्होंने कहा कि जिन्ना जी को, नहीं जी डेमोक्रेसी रहेगी, आप अपनी अपनी पॉइंट रखें, अपने पार्टी का, पीपल चाहे आपको वोट करें ना करें, वो भी नहीं वो कर पाए। और फिर उसके बाद काफी ऐसे इंसिडेंट्स है, जैसे भगत सिंह जी के टाइम पे उनके पास अपॉर्चुनिटी थी उनकी मदद करने की, वो नहीं की। ये तो चलो छोटी छोटी बात, छोटी तो नहीं है, इट्स अ बिग थिंग, बट इन द स्केल ऑफ इंडियन फ्रीडम। तो करण भाई, आपका क्या पर्सनली ओपिनियन है अबाउट गांधी जी? यूर फ्रॉम इंडिया, यू आर बेसिकली some I people personally, in yeah, I would also say he failed to sell the product। मतलब वो जो उन्होंने कहा, वो कर तो नहीं पाए ना। उसमें या तो कर देते, या तो लोग इतने ना मरते ना शादी फिर, एंड ऑफ द डे इनोसेंट पीपल डाइड। No, but do you put his achievement के इतने लोग मर गए इस चक्कर के अंदर, इस तरह हुआ? would you say कि एक बंदा अगर पीसफुल रहना चाहता है, just like being fair in the discussion to both अगर वो sides? मास लीडर होते,
So even if he failed, Yes, yes, yes. तो आप उस बंदे को तो गलत नहीं कह सकते थे, तो No, लोगों की why not? गलती है ना कि उन्होंने उस तरह किया। If he was an advocate of peace and he हाँ हाँ, वो तो failed, मैं मानता that हूँ, doesn't make him a bad person, right? The I'm the not saying issue, I haven't used, मैंने अभी तक bad का तो शब्द का प्रयोग नहीं किया है। well, he failed. You can say he failed. हाँ, I he would failed. agree. Yeah, उसका तो मैं Yeah. उससे तो I think anybody would agree with that कि हाँ जी वो Hmm. उसको failed। नहीं नहीं, I don't agree with that. Like, it's not that simple. He did a lot of things where he did succeed. So, but I think to say that he failed is a very narrow understanding of his ideas. No, no, he means in terms of like if we were to consider that he was all about peace or a non-violence, but the partition was anything but non-violent. But that's assuming, if you believe that he wanted partition. But like then you have to prove that he wanted तो फिर partition. यार वो आदित्य पहली बात तो ये कि ना Chalo, वो chalo, let's rephrase that. He was an advocate for the Brits to leave the subcontinent, and he wanted that to be a peaceful process. It didn't occur that ये way. तो बहुत शादी बाद में हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी की जो बुनियाद है ना वो रखी अंग्रेज ने है। There was an English guy who जो उसने कांग्रेस पार्टी की शुरुआत की थी। पता और है ये क्या, तो इस चीज के ऊपर ना करण भाई अभी पहले भी हम चले गए थे। आई थिंक वी नीड टू स्केड्यूल समथिंग इन कमिंग वीक्स। मेरे हाँ, कहने का मतलब ये है भाई कि देखो अगर आप उस टाइम का माहौल भी अगर आप चलो एनीवे यार, दिस इज अ न्यू गाय हार्ड टाइम्स, अगर वो कुछ कहना चाहे मैं तो बोल ही रहा हूँ। नहीं, Karan bhai, I don't think we have more time to take more people. We'll discuss आई थिंक वी further स्टिल गॉट यार 10 लेकिन 20 about the एक एक मिनट्स। बंदा ideas आया, उससे next बात time. तो कर उससे लेने बात दो ना। करें ही आप। इज ऑन स्टेज, उसे बात कर लेने दो। Let's देन take फिर a quick closing point from hard हाँ times, जी, and then we close the discussion. हार्ड टाइम्स गो है। Yeah, thank you so much. I think I'll just keep it very quick. I think his assassination, like post the independence, right? I mean, that was basically then after used big time by Congress. It just makes it a real good story, right? Very Jesus like, right? The guy just became a martyr, and then it was used by Congress then after for 20, 30 years, continuous propaganda, millions of dollars invested in making, curating this image, and just made this whole thing very, you know, uh, like, just the whole story narrative became super strong, in his favor. I think, that just made him larger than life. Then the Gandhi movie was there, right? I mean, the West, in the West, it became very popular. Just brought him to the center stage, and then Martin Luther King, and there's so much that happened, right? I mean, yeah, so all those things kind of added up to create this larger than life. I mean, he was big leader, but then again, like, all these things just added up. So I think he, like, the one thing I would blame Godse for is, there was like a huge mistake, just killing. I know he was completely unhinged, and made a lot of compromises, especially when it came to the interest of India. But like, killing him was kind of a turning point that then after was used by Congress to project him as Mahatma. His last name was also hijacked by Nehru family then after, and they kept getting using or milking it politically for years and years. So yeah, yeah. I mean that's what I see like Gandhi's legacy as. Thank you. थैंक यू वेरी मच। हार्ड टाइम्स मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। एट एवरी सिचुएशन जहाँ पे डिफरेंट पार्टीज और डिफरेंट पॉलिटिकल फोर्सेस और डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप काम कर रहे होते हैं, समवन इज़ द बेस्ट फिट इन टर्म्स ऑफ फॉर्मिंग एन इक्विलिब्रियम। और उस टाइम के ऊपर अगर हम देखें तो जो ब्रिटिश थे, they were in a situation जहाँ पे उन्हें पता था कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर तो एम्पायर्स टूट ही रही हैं, and somehow this is going to occur to their empire as well. The situation, there were revolutions going on, people's revolutions going on everywhere.
रशिया के ज़ार जो उस वक्त के किंग का, क्वीन एलिजाबेथ का जो फादर था, उसकी उसका कज़न था, एंड द वे थिंग्स एंडेड, क्वीन एलिजाबेथ का जो एक्चुअल हस्बैंड था प्रिंस फिलिप, वो प्रिंस ऑफ ग्रीस था, एंड द सेम वे बेसिकली रेवोल्यूशन ऑकर्ड। तो इनको इनको फर्स्ट हैंड एक पता भी था कि इस टाइप की चीज़ें होनी है। सो द बेस्ट फिट वाज नॉट समबडी एक्सट्रीमिस्ट, इट वाज समबडी यू कुड टॉक टू। तो अब ये बड़ा आसान है ये कह देना कि गांधी एक स्टूज था या जिन्ना एक स्टूज था या ब्रिटिश एजेंट था। इफ वेर फेयर, हमें एनालाइज ये करना पड़ेगा कि एट दैट टाइम, और दूसरी बात भी ये है कि पाकिस्तान, इंडिया, जिसको अब इस एरिया को चले सब कॉन्टिनेंट कह लेते हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट कम्युनिटीज का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उसके ताल्लुकात होंगे, वो कोर्डियल होगा सबके साथ, तभी वो बात करेगा, फिर ही कोई कम्युनिकेशन होगी। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक लीडरशिप, जिस तरह आज के टाइम में लोग समझते हैं कि हमने फलाने को खामोश करा दिया, वो मेरे आगे बोल नहीं सका, वो उस सिचुएशन को तो आप टेम्परेरीली जीत लेते हैं, बट डिप्लोमेटिकली यू आर नॉट गोइंग टू अचीव नथिंग if you're going to shout at people, or you're going to kill them, or you're going to say I'm not going to sit on the table and negotiate and converse, then you're going to achieve nothing. वो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर है, and that is why it's stated कि it's the table which resolves the issues, and in order to sit on the table you have to have a certain amount of relationship. You have to have relationship and communication with your own community who you are representing, the sub communities within that, alliances within that, as well as a relationship with the people you are opposing. So part and parcel is tarah ki situation mein, in terms of diplomacy, some things, if we're fair, personalities like Jinnah or Gandhi or even Nehru or anyone in those times who happened to be successful, and I believe they were successful because that is why, चलो उस तरीके से नहीं, कई चीज़ों में वो फेल भी हुए होंगे, बट देयर इज़ अ रीज़न कि भगत सिंह को पूरी दुनिया के अंदर नहीं जाना जाता जितना गांधी को जाना जाता है, या जितना नेहरू को जाना जाता है। तो कोई तो डिफरेंस होगा, और ये जो है जी ज्यादती हो गई और इस तरह हो गया, ये सारी उस तरह की चीज़ें हैं। गांधी, जिन्ना एंड नेहरू were able to build relationships in terms of conversations on both sides, in not only both of those sides but other political forces as well, and that is what makes them successful. They were politicians of their time, and that is what leadership is about. It's about communication in many ways, and that is my take on the entire thing. हम यहाँ पे बैठ के दो दो तीन तीन चार चार दिन different End of the day, political everybody have the opinion. एक सेकेंड ना, करण भाई मैं एंड ही कर रहा हूँ तो फिर आप बोल दीजिएगा। डिफरेंट पॉलिटिकल नैरेटिव्स आते हैं और वो जाते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली स्पीकिंग जब भी आज से 200 साल 300 साल अगर बॉर्डर्स चेंज भी हो जाते हैं, कल को नहीं भी चेंज होते, these people will remain impacted. They were able to deal with multifaceted political forces, religious forces, in their time, and communicated relatively well. और कभी कोई नहीं साबित कर सकता कि वो किसी के स्टूज थे या स्टूज नहीं थे। You're going to find situations जहाँ पे वो controversial लोगों के साथ बैठे होंगे, or you're going to find times, because that's the nature of that job, and there will be times जब आपको नजर आएगा उनकी decisions harsh थी, and that is how I would basically end it. I think it would be wrong to say कि Gandhi was a small figure. He or for that matter Nehru or Jinnah, uh, they were very respectable figures, and we have to, मैं क्यों नहीं उस तरह, या आप क्यों नहीं उस तरह करण भाई, या ये जितने लोग आज के पॉलिटिशियंस हैं उनको देख लेते हैं हम। मोदी जी को इतना कभी कोई याद नहीं रखेगा, ना इमरान खान को, ना जुल्फकार अली भुट्टो को। फायरी
पॉलिटिशियंस आते हैं जाते हैं, 20 साल के बाद एक माइनॉरिटी उन्हें याद रखती है। इट्स जस्ट अ शायद फैक्ट। देखिए मैंने आपको पहले ही आती ही मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट ये थी, क्योंकि गांधी सेल इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश, उनकी उनके लिए बिकता है वो, उनकी फेवर में बिकता है। वैसे तो पूरी दुनिया में गन बजा के आए थे, अमेरिका का तो आपको पता ही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे इनकी कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स ने अकेले हमको तो नहीं गुलाम बनाया था, या हम पे कॉलोनी तो नहीं थी। इट गोज इन द फेवर। उसको तो मैंने आपको पहले ही आके बता दिया कि मैं अकेली जान कहाँ से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मुकाबला करूंगा, या बर्कली के साथ करूंगा। तो वो तो चलता है, वो तो वी ऑल अंडरस्टैंड। उनका प्रोडक्ट था नहीं था, या उनका, हाँ, बट ही फेल्ड टू डिलीवर द गुड्स जब टाइम आया। तो उसमें अगर इतनी वो, हाँ, ऐसे तो हिटलर नहीं भूला जाएगा, ऐसे तो कई लोग हैं दुनिया के जो नहीं भूले जाएंगे। ना भूले जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि यू हैव कंट्रीब्यूटेड वेरी ग्रेट आइडियाज टू द वर्ल्ड। ठीक है, वो कईयों को सही लगते हैं, कईयों को गलत लगते हैं, अपनी ओपिनियन है। लेट्स सी व्हिच मेक्स मोर सेंस टू द वर्ल्ड इन कमिंग, लेट्स से अनदर 10 years or 20 years. Okay, I think we have Vic Singh. Vic, अगर I आपका कोई कमेंट completely है, agree just with you, yeah. करण भाई। और इसी वजह से ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, और फिर लोग पर्सनल लाइफ्स के बारे में बात करते हैं पॉलिटिशियंस की। नन ऑफ दीज पीपल आर सेक्रेड पीपल, everyone's going to have some kind of vices. खैर, with that we're about to close, तो उससे पहले Vic Singh has joined us. Vic Singh, please go ahead, आप अपनी बात करें, और फिर उसके बाद we'll just go for the closing statements, and thank you very much. जी सर, आपने अभी वो अब बंद ही कर रहे हैं, तो मेरी स्टेटमेंट तो कुछ नहीं होगी। चलो, मैं कोई बात करूंगा तो नेक्स्ट टाइम कभी जुड़ते हैं। कर्ण भाजी की हाल ने? नहीं, गुड विक सिंह, इफ यू वांट, अगर आपने कुछ कहना तो बोल दें यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस पर बाल लंबी जाएगी, ब्रिटिश के ऊपर तो नहीं, बात कोई ना, लंबी नहीं ये नहीं, जाएगी। आप बात करें, कोई मसला नहीं, आप कोई बात बात करें। जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ हाँ, तो मैं ਕਰੋ ਗੱਲ अच्छा मसले वाले भी भाजी बैठी है लाहौर वाले हैं। जी वीर जी, गल नहीं, करो मैं, आप। हाँ जी कर्ण साहब, मैं गल कर रहा ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਏ ਜੇ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ 20-25 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ 20-25 ਸਾਲ ਹੋਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬਣਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ? बड़े अच्छे, बहुत ही अच्छे बंदे ही। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सबको छाड़ता, लेकिन आज तक उन्होंने कि ब्रिटिश का कोई म्यूजियम नहीं छाड़िया, सानू मरवाता। ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। मैं तारीफ ही कर रहा था, यार सानू मरवाता। विक सिंह जी, मतलब ब्रिटिश तो पहले तुसी जफियां पा के बैठे सो सारे। सर जफियां मजबूरी होंदियां, जफी से मजबूरी इन पंजाबी वर्ड कि सानू जफी पाउणी पैनी, क्योंकि क्षेत्र वड्डा हुंदा ना, उदों सर हर कोई झुकदा। अच्छा, कनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾਨੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ क्षेत्र ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ ਜਾਓ कर रहे हैं, लेकिन टाइम विल कम विद इंडियंस। चलें, ठीक है, इट वाज नाइस स्पीकिंग टू यू विक सिंह जी। इस वीक हम एक रैप अप कर रहे हैं इवेंट खालिस्तान के ऊपर एंड द खालिस्तान मूवमेंट। ये वाला इवेंट तो ख़त्म हो गया, प्लीज़ डू कम इनटू दैट। We would love to have your opinions. If anyone has closing statements, my statement about Gandhi, I have been very elaborate in terms of that. मैंने तो काफ़ी बता दिया है. I just think he was a perfect fit for that time, and that's why he was preferred both by the Brits and a lot of Indians of that time. And he was also somebody, even though with disagreements, the Muslims kind of communicated with, namely Muhammad Ali Jinnah and various others. तो इसी तरह होता है, जो बंदा कम्युनिकेट कर सकता है वही अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है। जो उसके अंदर कुछ लोगों को मसले मसाइल भी होते हैं, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट।
और इस तरह का बंदा बड़ा गलत भी हो सकता है, ये भी दे कैन गो एंड सेल द इंटरेस्ट ऑफ देयर पीपल अगर वो बंदा गलत हो। So it works both ways. It's a double-edged sword. If anyone else has something to say, please do so. Otherwise, thank you very much. जी सर, मैं एक थोड़ा कमेंट कर दूं कि जब कोई गुलामी होती है ना, तो वहां पे कोई वर्क वो नहीं कर सकता, किसी के साथ नहीं कोई शेयर कर सकता अपना वर्क। उसको ऑर्डर मानने पड़ते हैं, वो ऑर्डर को फॉलो करता है, उसके हिसाब से उसको अपनी औकात का पता चलता है। और वो हिसाब हुआ हमारे गांधी और जिन्ना नेहरू उस टाइम की स्टैब्लिश के साथ। तो वो अब तक उनकी वो गलती नहीं है, क्योंकि उनको वो जन्म ही उस हिसाब से मिला कि वो 47 से पहले के जन्मे हुए हैं। वहां पे सिर्फ गौरव गवर्नमेंट थी, वो किसी को उन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत अच्छी बात है। भगत सिंह भी वही उन्हीं जनरेशन में था ना। तो गांधी ने एक अलग रास्ता अपनाया, नेहरू ने अलग रास्ता अपनाया, और वो कुछ अलग करके चले गए, जो कि कहीं पे भी हमको कुछ बंदों को शूट करता, कुछ को नहीं शूट करता। मेरे को शूट नहीं करता, बाय द वे। इट्स नॉट अ वे टू independence. Independence, it was not independence, it was just shifting movement. सर उससे अभी जब बात ज्यादा होगी तो फिर मैं अपने ओपिनियन रखूंगा। थैंक्स जी लॉट जी। सर, आपके पास टाइम भी कम पता है है तो क्या, फिर बाद में बात करेंगे। बल्कि जो अगला हमारा इवेंट है वो पंजाब सेंट्रिक होना है, तो उसके अंदर इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू हियर योर ओपिनियंस। आपकी बात को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। वी ऑलरेडी हाईलाइटेड दैट इन दिस स्ट्रीम एज वेल कि 3 तरह की कम्युनिटीज़ हैं जो अपोज करती हैं गांधी की लीडरशिप को, या एक यूनाइटेड इंडिया को, या एक बंटवारा ना होने को प्रेफर करती हैं। वो एक तो रिलीजियस एसोसिएशन के ऊपर वो लोग जो माइनॉरिटीज़ के अंदर रह गए, एक वो जिनके सूबे या जिनके शहर डिवाइड हो गए, तीसरे वो जो बस इकोनॉमिक्स और क्रिकेट गेम्स वगैरह को करके और वो ख्वाबों की दुनिया के अंदर रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग यू आर द लास्ट वन, आपका ऑब्वियसली ओके पंजाब। सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वर्ड्स। मैं आपको सिर्फ यही बात कर रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे अंग्रेजों के, गोरों के, जो जी हमने सोचे हैं और देखे हैं, उनके ऐसे एक्सपीरियंस हैं। अभी मेरी जो लाइफ टाइम है उसमें भी एक्सपीरियंस है कि वो जी जी, गुलाम कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट टाइम आई विल शेयर विद यू ऑल गाइस, दैट्स इफ फाइन, इफ परफेक्टली आई एम फाइन। अवेलेबल। या लेकिन गोरों डेफिनेटली का गुलाम होना बिल्कुल वो नहीं है अभी हिंदुस्तानी के लिए, इंडियन के लिए। थैंक यू सर। नो नो अब वरीज। गलती वो हो अगला तो वाला हम थर्सडे को करेंगे और फिर फ्राइडे को। तो डेफिनेटली विल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड विल फॉलो। आप किसी और को कुछ कर्ण कहना भाई है? जनाब इनके साथ तो हम बहुत पहले से हैं, लेकिन ये भी बीच में थोड़े डाउन हो गए थे, बंद हो गए थे, जी शायद जी, हो Vika, सकता I है। was busy, इनको man. हम अप कर लेंगे। I will start doing. मैं करूँगा या stream start end of this month again. भाई कराया ये भी करो, ਅਸੀਂ तो channel पहले nice. करना बड़े। विक ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮੈਂ subscribe ਕਰ ਲਿਆ। They are nice people. ਹੈਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, but we can talk to the ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। जी जी, कोई नहीं गलबात सब ना होगी भाई। Yeah, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ बैठे हैं, ये सोशल मीडिया इट्स फॉर गलबात। थैंक यू सर, yeah. थैंक यू, बाय बाय, चलें जी, टेक केयर, बाय बहुत बाय बहुत बाय। शुक्रिया। इज देयर एनीवन हु वांट्स टू मेक अ क्लोजिंग स्टेटमेंट? No, I'm right. I'm done. Thank you. ऑल डन। Okay, thank you very much. Slowly we're getting better. Hopefully we'll get better as we move on. Thank you very much.